So till date, what we have studied, right? I can say key exactly two theorems. What we required, right? We have studied. One is the Wilson theorem, and other is a what was that? Fermat. So Fermat theorem is a to the power p congruence to a mod p. Right? We have seen the proof of this and a question on this, right? How this will work and how we have to get the values of the bigger powers, right? So this was one of the theorem, right? This is called the Fermat, and next is we know that p minus 1 factorial congruence to minus 1 mod the Wilson, राइट। ये दो थ्योरम थे जिस पर हम लोगों ने काफी वर्किंग की, एंड इसी वर्किंग को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, उन पर क्वेश्चन देखा। बट वी हैव टू रीच टू द पॉइंट वेयर लाइक द जनरलाइजेशन ऑफ a to the power p is equal to 1 वी हैव टू सी। अब वो जनरलाइजेशन जो होता है, वो जनरलाइजेशन यूजुअली हमारे पास जो आते हैं, उसके लिए हमें दो तीन टर्मिनोलॉजी समझनी होती है। एक तो डिवाइजर्स एंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स की हमारे को वर्क करना होगा उस पर कि डिवाइजर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होते हैं, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइजर्स और डिवाइजर्स पर ही हम लोग को ऑयलर थ्योरम बेस है, राइट? तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो हमारे पास है कि डिवाइजर्स एंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होते हैं किसी भी नंबर n। इफ आई एम राइटिंग सम नंबर n, लेट द नंबर इज, एक छोटा सा नंबर मैं लूँ 12, राइट? सो हाउ मेनी डिवाइजर्स होते हैं, कितने डिवाइजर्स हैं, राइट? तो इसे डिनोट करते हैं डी एन से। दिस इज समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन विद 1। दिस इज कॉल्ड हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर। तो 12 के डिवाइजर्स की मैं बात करूं तो 12 का डिवाइजर मेरे पास क्या होगा, अगर मैं फंक्शन इसको लाइक जो हमारे पास गिवन है इसका समेशन ले रहा हूं, डी डिवाइड्स 12। तो सबसे पहला नंबर तो मेरा 1 है, सेकंड नंबर मेरा 2 है, थर्ड नंबर मेरा 3 है, देन 4, देन 6, देन 12। 1 2 3 4 5 6, राइट? ये मेरे पास डिवाइजर्स हो गए, दिस नंबर ऑफ डिवाइजर्स, राइट? अब मेरे पास कंपोजिट नंबर गिवन था, उस कंपोजिट नंबर पर हम लोगों ने जस्ट ये देख लिया कि कब कब ये कैसे कैसे डिवाइड हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर, जस्ट काउंटिंग करके मैंने, राइट, काउंटिंग करके हम लोगों ने यहाँ तक निकाला, राइट? अब इसमें मुझे चाहिए सम ऑफ डिवाइजर्स। यहाँ पर तो हमने निकाला नंबर ऑफ डिवाइजर्स, राइट? सम ऑफ डिवाइजर्स। अब अगर मैं सम ऑफ डिवाइजर्स चाहता हूं तो सम ऑफ डिवाइजर्स इज, राइट, नंबर्स जो मेरे पास आ रहे हैं 1 h2 h3 h4 h5 h6 एंड h2, सॉरी दो बार हो गए, राइट? So the sum will be 12। ये सम ऑफ द डिवाइजर्स की बात हम लोग कर रहे हैं अगर, दिस इज सम ऑफ द डिवाइजर्स। अब मैनुअली काउंट करना इज नॉट पॉसिबल कि ऑलवेज लाइक वी कैन फाइंड मैनुअली कि हमारे पास कितने कितने नंबर्स आ गए, राइट? अब वो नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत जिसपे हमारे वर्किंग हो पाए, राइट? एंड फॉर्मेशन जो हमारे नंबर्स के होते हैं वो नंबर अलग अलग क्या पॉसिबल हो सकते हैं, राइट? उसको देखने का तरीका हमारे पास क्या होगा। तो इस पर बेस है आज का हम लोगों का पूरा वर्क, ठीक है, राइट? अगर मैं कोई नंबर दे देता हूं आपको, लाइक n इज p1 to the power n1, p2 to the power n2, p3 to the power n3 up to pk to the power nk, राइट?
ये मैंने नंबर्स दे दिया, टोटल नंबर मेरे पास है। दो चीजें मेरे को यहाँ पर चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने, राइट, एंड सम ऑफ द डिवाइसेस क्या, right? ये दो दो चीजें हमारे पास वर्किंग के लिए रहे कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस हर एक के, और यहाँ पर गिवन है P1 P2 P3 अप टू Pk जो है हमारे पास है, ये प्राइम्स है, और N1 N2 N3 जो है जो इसके इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, राइट। तो अब हर एक में मैं अगर देखूं तो P1 को डिवाइड करने के, P1 को ऊपर N को डिवाइड करने के कितने अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, इसमें आपको शायद और आसान पड़े। 2 to the power 3, 3 to the power 5 एंड 5 to the power 7, मान लो यही लो, मैंने ये तीन चीजें रखी। अब यहाँ पर डिवाइजर्स की बात करें, राइट, सो 2 को डिवाइड करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 2, 2 स्क्वायर, 50, इतने ऑप्शन है जो 2 को डिवाइड कर सकते, या 2 के पावर्स को डिवाइड कर सकते। सिमिलरली 3 के लिए बात करूं तो 3 to the power 0, 3 to the power 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये डिवाइसेस हैं। एंड 7 के लिए, सॉरी 5 के लिए अप टू पावर 7, इतने डिवाइसेस हैं। तो यू कैन सी इन दिस वी हैव 3 plus 1 डिवाइसेस, फॉर दिस इज 5 plus 1 डिवाइसेस, एंड दिस इज 7 plus 1 डिवाइस, 4 into 6 into 8। सर तो पहला वाला फॉर्मूला है सम ऑफ डिवाइजेट्स का और दूसरा वाला है नंबर ऑफ डिवाइजेट्स का। अभी दोनों दिखाऊंगा बेटा। यहाँ पर ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे पास कितने, राइट, नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर मुझे निकालने हैं तो वो कितने होने चाहिए। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। कुछ कुछ बुक्स में ये जो नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके पास जो आ रहे हैं, इसे डिनोट करने का दो तरीका होता है। डी एन से कुछ डिनोट करते हैं, और कुछ कुछ में इसे डिनोट करने का तरीका जो होता है वो होता है टाउ एन से। या तो डिनोट करेंगे डी एन से या टाउ एन से जब नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हो, राइट, नंबर ऑफ डिवाइसेस 4 into 6 into 8, दिस इज टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस, राइट। लेकिन ये तो नंबर ऑफ डिवाइसेस की बात हुई, लेकिन यहाँ पर अगर सिग्मा मैं यूज कर रहा हूं तो हर एक जगह पर ये नोटेशन करीब करीब आपको सेम मिलेगा। सिग्मा एन का मतलब होता है सम ऑफ द डिवाइसेस, राइट। तो यहाँ पर सम ऑफ द डिवाइसेस का मतलब है, अगर मैं इस नंबर के साथ में ही केवल काम कर रहा हूं, राइट, इसके सम निकालने का मतलब, अगर आप ध्यान से देखना ना, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर जो था वो ये था, सेकंड हमारे पास ये था, थर्ड यहाँ था। अगर सर मैं, हम तीनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वेरी गुड, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं तो नंबर्स मुझे क्या मिलेंगे, जितने भी पॉसिबल डिवाइजर्स हैं ये पूरे नंबर्स के, वो पूरे के पूरे मिलने चाहिए, राइट। ये अगर याद हो तो हम लोगों ने ये काम पहले भी किया हुआ है पीएनसी में, राइट। तो यहाँ पर जब सिग्मा एन की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, तो दिस इज नथिंग बट 1 plus 2 plus 2 square अप टू 2 to the power 3, फिर 1 plus 3 up to 3 to the power 5, ये 1 plus 5 up to 5 to the power 7. So this will be 2 to the power 4 minus 1 by 2 minus 1. This will be 3 to the power 6 minus 1 by 3 minus 1. And this is 5 to the power 8 minus 1 by 5 minus 1. This is sum of the divisors की बात अगर कर रहे हैं।
Okay, everyone. Yes, sir. राइट, तो दो टर्मोलॉजी हमारे पास आ गई, एक टाउ है और एक या डी है, राइट, और एक मेरा सिग्मा, राइट। यहाँ पर अगर मैं आपको देता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ 10 और डी 10, जल्दी से निकाल के देखो तो। Sir, could you repeat? You have to find value of tau 10 and d10, d10 or sigma 10. Yes and no. Very good. Okay. Sanjana, this is okay. Yes, sir. Devang, okay. काव्यम पढ़ा हुआ है ये पूरा ना? Yes. This is right, the numbers, what we know, 1, 2, right, 5 and 10, right? Right, or you can say the sum is again, you are getting 10, 17, 18, right? So this is simplest form. But what if the number is in the form of something like, if I'm giving you the number n is equal to 1n. So like both you have to find tau and sigma. Okay. Done, everyone. Good far, good far. These are the simple one. Right. Pretty. 180, right? Directly I can write
5 minus 1. Okay. Also 26. हाँ, 2, 13, 4, 6. And we 91, 546 something, na? Good, good, good. Okay, now this function is called theoretic function, right? A number theoretic function f is multiplicative. मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन मैं ले रहा हूं इसमें ए बी का, तो आप लिख सकते हो एफ ए इंटू एफ बी, राइट? ऑब्वियस सी बात होगी यहाँ पर, आप जानते हो ये बात, ए बी का जीसीडी जो होगा वो 1 होना चाहिए, राइट? तो बड़ा काम आएगा ना, यूज भी वही कर रहे हैं, बट अच्छा काम आता है ना, काफी सारे क्वेश्चन में यूज करने में हम लोग को थोड़ा आसान पड़ जाता है। सर ये ऑयलर टोशन में भी करेगा काम? अभी बस वही पहुंचना है हम लोग को, बेटा पहले टोसेंट में ही पहुंचने जा रहे हैं, वहीं के लिए पूरी वर्किंग चल रही है हम लोग। डन। तो ये जितने फंक्शन होते हैं, जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं, राइट? सेकेंड फंक्शन जो हम लोगों ने दो चीजें रखो, टाउ एंड सिग्मा, आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, राइट? टाउ और सिग्मा दोनों ही फंक्शन आपके पास होते हैं, मतलब मैंने एक एम रखा। हाँ, ये ख्याल रखना है आपको, जो हम लोगों ने बात करा था कि अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, दो नंबर ले रहा हूँ जीसीडी, राइट? एम और एन दो नंबर्स ले रहा हूँ, तो दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए। एम अगर मैं बोल रहा हूँ P1 टू द पावर अल्फा 1, P2 टू द पावर अल्फा 2 अप टू PK टू द पावर अल्फा के है, और एन मैं बोल रहा हूँ, राइट, अज्यूम करता हूँ Q1 टू द पावर बीटा 1, Q2 टू द पावर बीटा 2 अप टू QK टू द पावर बीटा के। ये mn, और mn का जीसीडी हम लोगों ने 1 लिया है, मतलब साफ है कि दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे पास कॉमन आ रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं टाउ m की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास जो नंबर आ रहे होंगे अल्फा 1 प्लस 1, राइट? ये सब के सब अल्फा 2 प्लस 2 अप टू अल्फा के प्लस 1, राइट? सिमिलरली टाउ n मेरे पास जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा बीटा 1 प्लस 1, बीटा 2 प्लस 1 up to beta k plus 1. So what is the value of tau mn? क्या होना चाहिए? सर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। That we are seeing ना, आराम से हमें आंसर भी मिल जाएगा। प्लीज राइट डाउन।
A, right? वेरी गुड शिवांग। एंड यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि सिग्मा m इंटू सिग्मा n इज नथिंग बट सिग्मा mn। आई होप ये पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिग्मा एम एन में हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, दोनों के अलग अलग मल्टीप्लीकेशन आ रहे हैं, तो वी कैन से कि टोटल नंबर्स वी आर गेटिंग विल बी द सेम, राइट? फिर मल्टीप्लीकेशन में भी आई विल गेट द सेम नंबर्स, राइट? राइट? नाउ सो इफ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन ऑन दिस, राइट? एक छोटा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट? n is equal to 2 square 3 to the power 5 into 103, राइट? इसका सिग्मा एंड टाउ जल्दी से निकाल लें। वेरी गुड। ठीक है, इट्स ओके। आई होप यू ऑल नो दिस, राइट? बट ये पूरी प्रॉपर्टीज जो है, जो हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर एंड दोनों हमने चीज निकाली, ये हमें यूज करने के लिए तब काम आ जाता है जब हम लोग को ऑयलर के साथ में एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला मिल जाता है। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। ताऊ क्या है इसका? 3 into 6 into 2, एंड यस, सम ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट, राइट? आगे बढ़ सकता हूँ अब, राइट? इसके प्रॉपर्टीज भी हमने देख लिया and कैसे वर्क कर ना। फिर से हम लोग थोड़ा सा बैकवर्ड चलें। अगर याद है सभी को, ऑब्वियसली याद है कि फर्मा थ्योरम जो था, तो फर्मा ने हम लोगों को ये बताया कि अगर ए और पी का जीसीडी मेरे पास 1 गिवन है, तो ए टू द पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड पी। बट एज आई सेड कि उन्होंने इसके साथ में ये भी बोला कि प्रूफ बताओ। फर्मा के साथ भी बहुत बड़ा सा एक गड़बड़ था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज थे जिनको जिनके बारे में उससे पूछा गया कि व्हाट इज द प्रूफ, राइट? व्हाट इज द प्रूफ, तो उनका था कि आई डोंट नो द प्रूफ एंड आई विल नॉट टेल यू द प्रूफ, राइट? मेरे को लगता है एज ए मैथमेटिशियन, राइट, मेरे को लगता है कि लाइक वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? टीचर ऑफ मैथमेटिक्स बोलना बड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? तो हमारे लिए एक सबसे जेन्युइन ये होता है, इफ यू आई नो समथिंग, राइट, तो मेरे को शेयर करना बनता है, राइट? मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये हो जाता हूँ कि हर्ट हो जाता हूँ कि यार, मतलब अगर आप जानते हो तो 100% आपको डिस्कस करना चाहिए, और डिस्कशन में कहीं बुराई नहीं होती, राइट? सो बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे लास्ट थ्योरम जो फर्मा का लास्ट थ्योरम भी था, वो भी अपने आप में कंट्रोवर्सी ही रखा कई सालों तक। तो उसने लाइक पेपर के एक छोटे से पेपर में उन्होंने लिख दिया x to the power n plus y to the power n, right, never be equal to j to the power n for n greater than 2, राइट? तो ये काफी कंट्रोवर्सी रही, काफी बातें रही उसमें,
बट ठीक है, अब वो तो पास्ट की चीजें होंगी। तो यहाँ पर फर्मा का ये थ्योरम, हमारे पास तरीका नहीं मालूम हो रहा था कि ये क्यों ऐसा कर रहा है और कैसे ऐसा हो पा रहा है। ये करते हुए करीब 100 ईयर्स के आसपास हो गए, तब ऑयलर ने एक इसके लिए जनरलाइजेशन दिया। ऑयलर ने बोला कि नहीं, ए और पी वन है, इसके लिए ही वर्क करे, इसकी जगह पर हम लोगों को, राइट, फंक्शन को यूज करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना चाहिए या सोचना चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा फाई एन रिप्रेजेंट किया, फी या फाई, राइट, जैसा भी, कई जगह पर आप फी देखोगे, कई जगह पर फाई देखोगे, राइट। राइट, तो फी या फाई जो भी आप बोलो, फाई एन को डिनोट किया, एंड दिस इज अ फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर दैट आर नॉट डिवाइडिंग द सेट, right? How many numbers are possible that are not dividing this n, are the phi n or phi n, right? तो इस फी फंक्शन को, राइट, जब वर्किंग में करूं तो लाइक फी वन, राइट। सो जैसे फर्स्ट नंबर मेरे पास है, जो फी वन को वन से ही डिनोट किया गया ना, बाय डेफिनेशन ये दिया गया, और n ग्रेटर देन इक्वल टू वन, फी n डिनोट the number of positive integers सर आई थिंक वो कोप्राइम होना चाहिए। less than n and relative prime or co-prime, relative prime, or you can say the co-prime to n, right? ये definition जो for any n greater than equal to 1, राइट। सो जितनी बार आप n को ले रहे हो वो उसको डिवाइड नहीं करता, राइट। तो ऑब्वियसली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब को प्राइम नंबर से दोनों एक दूसरे के लिए तब के लिए पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि लेट द नंबर इज 30, कौन कौन से नंबर्स होंगे जो हमारे पास रिलेटिवली प्राइम हो रहे होंगे, तो ऑब्वियसली भी एज एज इसलिए मैंने पी वन को पहले ही वन लिख दिया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की बात ना रहे, राइट। तो फर्स्ट नंबर इज वन, टू काम नहीं करेगा, थ्री काम नहीं करेगा, फोर काम नहीं करेगा, फाइव काम नहीं करेगा, राइट, एक ना एक नंबर हमारे पास आ जा रहे हैं, सिक्स काम नहीं करेगा, सेवन काम करेगा, राइट। एट नाइन टेन जितने प्राइम वाले नंबर्स हैं वो तो हमारे को दिखाई दे ही रहे हैं, राइट। 19 के बाद 23 एंड 20, इतने नंबर्स तो पॉसिबल हैं जो दिख रहे हैं। तो वन टू सर 11। फाइव सिक्स सेवन, एक बच गया शायद 11 हमारा, एट। तो टोटल नंबर जो मेरे पास आया फिर 30 के लिए, वो नंबर हुआ, राइट। तो टोटल हमारे पास नंबर के फॉर्मेशन जो भी आए, तो अगर मैं बोलता हूँ फाइव सिक्स, हमारे पास क्या आएगा, तो सिक्स नंबर के लिए अगर मैं बोलूँ तो वन, टू काम नहीं कर रहा, थ्री काम नहीं कर रहा, फोर काम नहीं कर रहा, फाइव काम कर सकता है, तो दिस नंबर इज टू, राइट। एंड अच्छी बात क्या है कि अगर मैं प्राइम नंबर्स ले रहा हूं तो उसमें ये काम और अच्छे से कर जाएगा, लाइक पी ऑफ 11। अगर मैंने 11 लिया, ऑब्वियस बात है जितने नंबर्स होंगे वो सब के सब हमारे पास आएंगे एक्सेप्ट द नंबर 11। सीधा मैं बोल सकता हूं नंबर विल बी 10।
Okay, everyone. अब अगर ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट, तो जल्दी से कुछ नंबर्स हम लोग निकाल के देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। इसके बाद इससे, राइट, इसके जो लेमास हैं एंड थ्योरम्स है उस पर काम कर लेंगे थोड़ा सा। ट्राई दिस P of 42. Very good. Sanjana, Kavyam, Aryan, Utkarsh, Shivang, first. Very good, Shivang. Sanjana, very good. Very good, everyone. Okay, right? So the first theorem on this is 1. When I'm saying if P is prime, right, and K greater than 0, then Phi of P to the power K is equal to P to the power K minus P to the power K minus 1. Or you can write this as P to the power K is common out 1 minus 1 by P. 1 minus 1 by P. So how will this theorem work if there is a specific number like 2 cube into 3 to the power Yes, 4? beta, P is prime now. So P is prime to 2, 3, 5, 7 in number is given, right? Then we can write directly, we can write the formula. We have formula, right? We have formula, Sanjana, right? For that we are doing all the same, right? सर इसका प्रूफ क्या है? अभी करता हूँ, ठीक है? So just we'll go for the proof of this. Right, GCD of ये हमेशा ख्याल रखना कि जो हमारे पास like all the cases we are taking just GCD of n and p to the power k or this number is always 1. Right? This is possible only if p is not dividing and p is not divisible by, right? So we can say there are p to the power k minus 1 integers between 1 and p to the power k divisible by p, right? The numbers are p, 2p, 3p, up to p to the power k minus 1 into p. Is this okay?
Is this okay? Okay. Means, Yes, what's sir. the meaning of this? What is the meaning of this? Means, in the set of 1, 2, 3 up to p to the power k, right? Exactly p to the power k minus p to the power k minus 1, right? Sir, Integers okay. that are co-prime or relative prime. Co-prime, now very simple proof, right? Co-prime to p to the power. So I can say p to the power k is nothing but p to the power k minus p to the power k minus 1. This. By proof, like this is the proof, like how we can just measure something into examples. We can see the examples. This beta k. Sorry, yeah, these are k, na? These are k. Yeah, Shivam. K, k, all this k, na? K. So, like if the number is 16, phi of 16. 16, we know that how many numbers are To the there. power 4. Right. So this will be like, we know that how many numbers are possible, not divisible by, right, all the numbers. So, right, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, and 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 numbers. Or we can write this as, because this 16 is nothing but 2 to the power 4. So this will be 2 to the power 4 minus 2 to the power 3. So this is 2 to the power 3 only, the 8 numbers are. Right? Or what is the value of this 27, 327? 3 cubed. 3 cube. So how many numbers are possible? Write down in the chat, write down, write down, write down. That's it. Okay. Very good, everyone. Very good. Very good. So this is the first concept. So this is 3 cube minus 3 square, right? The number you are getting, right? And second, this is the first, right? Right? Next, the second theorem is the function phi is a multiplicative function. Means phi n1 n2 is nothing but phi n1 into phi n2. But you know that n1 and n2, right? The GCD of this will be 1. Sir, Right? इसका भी proof. अभी तक तो we'll do it. Note down.
Okay, done everyone? So see. So how we can prove that? This is a very the proof is very simple and we have to work on that, right? Suppose I'm saying there are two multiplicative numbers we have taken. Let m and n, right? So GCD of m and n must be 1. Is this okay? Right? Then we can write the number as 1, 2, 3, 4 up to m. Then m plus 1. In a row wise, I'm writing all the numbers, right? 1 to m into n. 1 to mn I'm writing. M plus 2, m plus 3, to m plus m. That's we can also write as 2m. Similarly, 2m plus 1, 2m plus 2 up to 3m. Right, and this last one will be n minus 1 into m plus 1, n minus 1 into m plus 2, and the last is mn. Now, row wise, I'm writing all the numbers. Okay, done everyone? So let's suppose we are saying, right, in two cases, I'm saying like GCD of any number qm plus r or m is equal to GCD of rm, or that's I'm taking as d, right? GCD of mr or GCD of some number, this is taking as d. Obviously, d greater than 1, equal to 1, so both the numbers will be there only. Right? Then we claim, be careful now for this one. We claim that no element in the rth row of the array, means r, m plus r, 2m plus r, k m plus r up to n minus 1 into m plus r is relatively prime or co-prime to mn. This I'm saying. Right? Why we are doing so, why we are saying so? Note it down, everyone. Note down, note down, note down. GCD of RMM we have taken as D, right? Means we are saying, right, D divides M and D divides R also. Then D divides Km minus R for any K. Is this okay? Right? D divides M and D divides R, then D divides Km minus R for any K, right? कोई भी number मेरे पास है, if divisible by D, dividing this number M as well as K, because GCD we have taken, GCD of RMN is 10, means D is the factor of R as well as M. So D is dividing any of the number is in the form of Km minus R.
right? For any k, this will be divisible, right? Right? Means, what is the meaning of this, right? Is this okay, everyone? यहाँ तक clear है? Is this okay, everyone? Getting everything? So, Krisiv, is this okay? Yes, sir. So, if the number that are co-prime, right? The number will be co-prime with Mn, right? We will not find. I'll give example for this also. Now, will not find any except in those rows whose first element is co-prime to M. I mean, just I'll give you the example for this also. So we are not able to find any of this relatively prime number, right? So for this, like more understanding, what I'm doing, I'm giving you the example, right? When I'm taking M and N as two numbers, N is equal to 5 and M is equal to 6. So we have all the array 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, and 30. Huh? Okay. Now see, how many numbers are relatively prime to Mn in this case? Can you say this? Which row will be like not prime with this? What about this row? To number Mn, this means 30. What about this one? Second row, third row, fourth row, right? And sixth row. If you'll see this, these all are divisible by 2. These all are divisible by 3. This having the factor again, all the numbers 2 and all the numbers 6. So in these rows, right, second row, third row, fourth row, and sixth row, right? Relative prime to 30 is not right, not possible in this one. So what numbers we are getting in this, right? The first is the 1, 7, 13, 19, 25,
And second is the 5, 11, 17, 23, and 29. Every time you'll get the same. Right? So all the factors that are divisible by one of the factor or the numbers of Mn, so always you'll get the factors, you have to omit that, right? Only you are getting the same numbers as it is given in this one. Right? So from this only we are saying K phi of Mn is nothing but phi m into phi n. Or just we can justify again with the same this thing, right? This number is Km minus R. Right? So if I'm giving you few of the examples, right, when we have to find this, P72, what is the value of this? So multiplication not about only Mn. We can go for M, N, R, and like N1, N2, N3, and all this, right? Note down. Done, Sanjana? Products in the Very good. So you have the numbers N1, N2, N3, and all the numbers are there, right? Directly we can go for all the possibilities. Very good, very good. See, so 72 is a number, right? Obviously, it's not prime. So we can say this 72 is 3 square to cube. that means 5, 8 into Right. 5, 9. 5, 3 square into 5 to cube. And we know that 3 square is, right, when we have to find this 3 square and 2 cube. We have already seen in this, if these are prime to the power k, right, then what we have to find in this case, right? So applying those formula, we can say this will be 3 square minus 3, this will be 2 cube minus 2 square, right? 6 into, right, 4, that will be 24. I hope everyone is getting this. Very good. Right. This is the simplest form, simplest formula. Like you can use this, right, to get your this. Very good, Sanjana. What is P300? Done. Are, how is possible? Everyone is getting different answer. These are simple things. I got 4 answer, all are different. Only the basic calculation part.
right? 300, right? This number 300 is 3 into 4 into 25. So this will be 3 to the power 1, 2 square into 5 square, right? Phi of this. So what we are getting from this? So this will be P3 into 2 square into 5 square. What is P3? This is 2. What is 2 square? And what is 5? Sir, for 5 square, it would be 20. 8 is 8. Right? See, but the answer is different. Check. The answer is different, No, no. not 80. I know. Oh, someone is writing book. So सारे आंसर different है. No, no, this is okay. Oh, someone is writing answer. Is this okay? Okay. So this is the simple concept, right? Only what you have to, if p to the power k is in the form, so you have to write down p to the power k minus p to the power k minus 1. But, theorem third, just wait. Third, right? Any n is given p1 to the power k1, p2 to the power k2, up to p r to the power k, right? And we have to find out phi n. This is nothing but, I can say for this one is p1 to the power k1 minus 1. The formula, I'm proving the formula, right? Now directly फिर ये theorem वाला theorem 2 को directly combine कर सकते हैं. अभी कर रहा हूँ बेटा उसको. k1 minus 1, p2 to the power k2 minus p2 to the power k2 minus 1, and so on up to pr to the power kr minus pr to the power kr minus 1. So if I'll take out all p1 to the power k1, p2 to the power k2 up to pr to the power kr, p1 to the power k1, p2 to the power k2 up to pr to the power kr. So what I'm getting, 1 minus 1 by p1, 1 minus 1 by p2 up to 1 minus 1 by pr. Right? And this number is nothing but n. One minus 1 by p. So this formula, this is the formula. You can also use this form. Right? If you understood, right, you can go with this. Is a note down, please. Note down. Take your time. Note down. So if we have to find the numbers, right, it's a number like 1000 and the different numbers is in the powers and all, right? So we can easily find the numbers, right? How many divisors are possible and what are the divisors, or phi n or phi to the power. And why we are finding this? Because Euler
Protein is given the formula, right, for a to the power p minus 1 is equal is congruent to 1, right? In spite of that, we have to use this phi. So just find phi 360 by using this form. Sir, answer भेजो. Very good. Very good. Very good. Fast, 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 everyone fast. This is now very simple, yaar. With this formula too, this is very, very, very simple. Only you have to just see ki how many factors are there, right? The factors of, right, factors of 2 and 3 and 5. Not required to see ki how many factors are, right? How many factors are there, right? 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, and 1 minus 1 by 5. Right, so this is nothing but 360 1 by 2 into 2 by 3 into 4 by 5. 96. I hope everyone is getting this. Devang, check beta, check, 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 check. Aryan, is this okay? Yes, sir. See, one more. P of 5040. Do it fast. Note down the last one. Okay, like not getting the answer properly. Last one, note down the last one, go for this. Arey वाह, very good, Sanjana. Now think. Very good, Kavyan. So usually three terminology we have studied today, right? Tau, sigma, and phi, right? Tau, sigma, and phi. Aryan, just see the calculation again, beta.
अब हम check your answer again का. Very good, very good. Sanjana, do it fast, do it fast. Utkarsh, Utkarsh, fast. इतना टाइम, केवल बेसिक कैलकुलेशन. Very good, Sanjana. Very good, Utkarsh. Very good, beta. See, Aryan, very good, everyone. See, so the total will be 5040. Acha, 5040 is factorial 7. Means, So we can write it as 5 1 into 5 2 into 5 3 or something like that. right? Why to write all this thing? Right? 2k factors are there 3, 4, 5, 7. So 5040 को factorize करके तो calculation easier हो जाता है. अच्छा, हाँ मतलब आई एम सेइंग कि this 5040 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5, 6 by 7, 3 2 6, right? And then we have to go for the prime numbers. How many primes are there for this? 5 6. So 5040 2 to the power 4 into 5 into 3 square into 7 है. तो उससे थोड़ा calculation easier होगा. चलेगा बेटा, जैसे भी आप करना चाहो, यहाँ भी कैलकुलेट करके यू विल गेट द सेम आंसर. मतलब 16 into I guess 72 something you are getting ना. Yes, 1152. Right. Let's see, एक और कैलकुलेशन फिर तो बनता है. 36000, the last one on this. Then we'll go for one more theorem on this. Very good. Very good. Kavyam, Yes, sir. check करो एक बार. Done everyone? Devang, very good. Utkarsh, very good. Kasif, Sanjana, Aryan, check your answer, please. सर मेरा गलत है क्या? नहीं, सही है बेटा, एकदम ठीक सही. है सर. 0 volt है. हाँ, 0 1. So how you are finding this?
or just writing all the number. I don't know, but I'm comfortable with this, so I'm writing all this. Only the factors of 2, 3, and 5. सर उसका फैक्टराइजेशन फिर से हेल्प करेगा कैलकुलेशन में. Okay. Okay, everyone. हाँ सर. Right. I'll not divide by 5. I'm multiplying 5 to right in the numerator and denominator. Okay. Now, this is the theorem, but I'll suggest we try to prove this. Right. Theorem 4. We have to prove for n greater than 2, phi n is an even integer. सर लेकिन ये छोटा सा डाउट था. Mhm. सर वो जो हम लोग 5 वो करते हैं तो उसमें 1 क्यों इंक्लूड करते हैं? बिकॉज 1 इज स्टिल डिविजिबल बाय द नंबर्स. Mm. One is the like एक फैक्टर हमें हमेशा लेना पड़ता है फॉर द नंबर्स, राइट. एक नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी है, राइट. So that's the reason we have to include 1 on all the numbers. ओके सर. सर ऐसे प्रूफ करना है क्या? Right. Think how to go for that. Very good. And it's given n is greater than 2, right? Okay, everyone. Not bad, Sanjana. Very good. बेटा. बहुत अच्छे. So we have to apply for let n is equal to nothing but p1 to the power k1, p2 to the power k2. May I start? Pr to the power kr. So phi n for this will be at least one p is there. So this p1 to the power k1 minus p1 to the power k1 minus 1, right? p2 to the power k2 minus p2 to the power k2 minus 1, and so on.
PR to the power KR minus PR to the power KR minus 1, right? So you can see each and every number is odd. And so like odd minus odd will be even always, right? So this must be even. Okay. But like how to use all the numbers, right? All the theorems and all the numbers, how to use this, right? Just I'm giving you one question, right? On this. Verify that the equality for Pn, Pn plus 1 and Pn plus 2 holds for n is equal to 5186. It may be possible they will give you the number, which number this is possible, right? For the sake of just practicing few of the numbers, just I'm giving you an example, okay, right? How to go for this, hold for n is equal to 5186, Pn plus 1, Pn plus 2. Right, you have to verify for all this is same. Just the calculation and calculation. Done. What is P 5186? Sir, 2592. What are the factors you are getting on this? 5186 is equal to 2 into 2593. And for 5187? Sir, 5187 is equal to 3 into 7 into 13 into 19. So that would also be 2592. Very good. And again, you have to just see the number. And 5188 is 2 into 2 into 1297.
Good. Again, you are getting the same number. 2592. Yes, sir. All are coming 2592. Very good. For 5186, it's coming 1 into 2592. For 5187, it's 2 into 18 into 12 into 6. And for 5188, it's 2 into 1296. Always the factors, right? So this would be the magic, right? So I'm just sending you the question, right? Few of the question, the terminology are totally different and all, right? So we have studied, right? Tau and phi, these three. We have to remember these three, we have to apply, and when we will go for the like very good questions, right? Obviously, this will work for you, right? So just sending you question, I'll request, I'll suggest at least for an hour or 2 hours, just you have to do the questions, right? And if possible, send me the solution, right? So I'm sending you 12 question of this from the book only, right? So just go through that, right? If you are finding any difficulty, just text me, right? I'll try ki, I'll text you if you are finding some help on that, right? Okay, so everyone ready? Just I'm sending. Sir, is it fine if I can submit it tomorrow or something?